and as a fuel for the steel sector. So the problem which coal brings by combustion in the power generation sector is not 100% translatable to the steel sector. So the reforms that are needed to attract investment of the steel industry in the coking coal production sector, we are happy to tailor make it, and I welcome any suggestions from the steel industry. Similarly, the reforms that were done in the amendment of the Coal Bearing Area Act recently have also not really been exploited by the steel industry. We allow you to use our land to set up infrastructure. Now, indirectly it also means that the washeries which have been set up or any other infrastructure set up by Coal India on its lands can also be leased out to the non-public sector companies. So this is again a golden opportunity for you to avail of the reforms that have come in the use of Coal Bearing Area Act land. So the technology that you use in steel making, the stamp charging technology, etc., which might allow you to use slightly higher, ash content in the coking coal, that is something else which the steel industry needs to look at. The technology used in washing of coal, which allows us to reduce the ash content further, and in the reverse, also allows you to use slightly higher ash value in your steel making processes. So I think the steel sector's need for coking coal from Indian domestic basins needs a complete end-to-end solution, and we welcome your partnership. And as I said, that the ministry is now geared towards the next generation reforms, moving on from thermal coal to coking coal. And I also must add, in the same respect, that the setting of the coal trading exchange, which we are in a very high stage of setting up, will be yet another opportunity for importers, because I do hear that the coking coal import from Australia are often facing problems of distortion in the price discovery process. So once we have a domestic coal trade exchange, which is one of the few physical trading exchanges in the world, you can avail of that as well to get the exporters from other countries to determine their pricing here. So to that extent, the ministry is fully geared, and this is something which the Minister has been talking to us. Coal strategy or a coking coal mission, the document which has been produced by the ministry last year. It was produced in partnership with Ministry of Steel, Indian Steel Association. You will see that the coking coal mission does not concentrate only on the issue of production. It is not only related to reducing imports by producing more coal. Today we have the Steel Secretary, we have SAIL Chairman, JSPL Chairman, and Tata's and all the large steel players are here. We have spoken about lots of things in the coking coal mission strategy. It includes more exploration work to be done for coking coal, producing more of it. You see, the country's attention for the last 10-15 years, especially after the Supreme Court decision in 2014, was entirely concentrated on thermal coal. And power is definitely the number one requirement without which there is no life. So the country was besotted with thermal coal, so much so that a lot of high GCV coal which we produce, which could go to the secondary steel sector, has also been allocated to power sector. So what we need to do, as the mission document points out, is now to concentrate more on exploring the money which we used to give from the Government of India to CMPDI for exploration and carving out of more blocks. So 95-97% of their work used to be focused on thermal coal. Now we need to do the same attention, give the same attention to coking coal. So exploration of coking coal for production, the kind of reforms that we have introduced in the larger coal
mining sector, award of coal blocks, commercial mining, etc. Perhaps the need of the steel industry for exploration production of coking coal may be slightly different from what we have introduced, though those reforms are common for both thermal coal and coking coal. But if the steel sector desires, let us say on the area of fiscal revenues, the imposition of the 400 rupee, clean coal cess, now that needs to be considered whether it should really be valid for the coking coal industry, because in that sector, coking coal actually, technically, I'm sure all of you. प्लांट मशीनरी के भीतर होता है, तो उसका उपयोग हम जल्दी कर सकते हैं इस्पात में परिवर्तित करके, स्क्रैप में परिवर्तित करके। तो इसलिए अल्टीमेटली हमें सर्कुलर इकोनॉमी में जाने के लिए स्क्रैप की आवश्यकता, रिन्यूएबल एनर्जी की आवश्यकता, अगर ये दोनों चीजें हो जाती है तो हमारी स्टील भी ग्रीन हो जाती है। तो किस प्रकार से जल्दी से जल्दी हम वहां तक पहुंचे, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और मगर उसमें हम कहें कि शॉर्ट टर्म में और मीडियम टर्म में हमें अपने उत्पादन को बढ़ाने की बहुत अधिक आवश्यकता है, तभी हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, स्क्रैप जनरेट होगा और हम सर्कुलर इकोनॉमी निकल सकेंगे और हमारे जो आयरन ओर या कोल के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसे कम किया जा सकेगा। तो ये इस एक हम कहें कि बड़े से मूल रूप से जो एक फ्रेमवर्क है उसके भीतर करते हुए हमने मंत्रालय में भी अपने विजन्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों ये सब बनाए हुए हैं और सब जिस इस्पात जगत से जुड़े हुए जितने महानुभाव यहाँ उपस्थित है सब उसके बारे में जानते हैं और हमारी लगातार आप लोगों से चर्चा होती रहती है। तो हम तो ये कुछ एक बातें हैं जो आज के इस जो हमारी वर्कशॉप है, कॉन्फ्रेंस है, उसमें जो चर्चा के लिए हमारी ओर से होंगे और मैं आश्वस्त हूँ कि उसके पश्चात कोई एक समाधान कारक सुझाव हमारे सामने निकलेंगे जिन पर हम भविष्य में अमल कर सकेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रमोद अग्रवाल जी का, आदरणीय मंत्री जी का, सचिव कोयला का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इस प्रासंगिक विषय पर कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए धन्यवाद। और जो नैरेटिव है वो ये है कि कैसे हम कार्बन फुटप्रिंट्स कम करें, उसके बारे में थोड़े समय पूर्व हमारी जो चर्चा हो रही थी कोल सचिव और कोल इंडिया के अध्यक्ष से। तो ये इस डायकोटोमी को हमें किस प्रकार से दोनों को हमें बैलेंस करना है, तो वो हमारा चैलेंज है और वही एक उद्देश्य भी है हमारे आज यहाँ पर उपस्थित होने का। विभिन्न पहलुओं पर आप दिन भर में चर्चा करेंगे। लगभग हमारा 60 मिलियन टन हमारी आवश्यकता स्टील सेक्टर में रहती है कोकिंग कोल की और 90% से अधिक जो कोकिंग कोल है उसका हम इंपोर्ट करते हैं। हमारा डोमेस्टिक कोकिंग कोल जो है उसे कैसे हम ब्लास्ट फर्नेस में उपयोग करने के लायक बनाए, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। कोल वॉशरीज किस प्रकार से और एफिशिएंटली रन की जा सके, स्थापित की जा सके, वो एक चैलेंज है। तो मैं उसके बारे में दिन भर में चर्चाएं होंगी और कुछ सुझाव आएंगे। हम लोगों के सुझाव भी हम प्रस्तुत करेंगे। जो रॉ मटेरियल है हमारा, भले वो आयरन हो या कुकिंग कोल है, जो हम लोगों का एक प्रोजेक्शन है वो ये कि लगभग 30 वर्षों तक हमें रॉ मटेरियल पर आधारित इस्पात उत्पादन करना होगा। उसके पश्चात हम सर्कुलर इकोनॉमी में आ जाएंगे जो प्रोजेक्शन है। क्योंकि जब अमृत काल जो 25 वर्ष का है तब तक हम लगभग सर्कुलर इकोनॉमी में आ चुके होंगे, ग्रीन स्टील बनाना प्रारंभ कर चुके होंगे। तो इसलिए अभी तत्कालिक रूप से ये बहुत अधिक आवश्यक है। हमारा कंजम्पशन, हम कहें कि जो विश्व का जो एवरेज है उसका 1/3 1/4 है। कैसे कंजम्पशन बढ़े? हम बड़े देश हैं तो स्क्रैप बहुत अधिक जनरेट होगा। तो उस तरह के स्क्रैप को जनरेट करने के लिए हमें प्रोडक्शन को जो वर्तमान में कम से 4 गुना लॉन्ग टर्म में करने की आवश्यकता है 20 से 25 वर्षों में, और मीडियम टर्म में उसे कम से कम दुगना करने की आवश्यकता है, मैं कहूँ कि 2030 तक। तब हम स्क्रैप जनरेट कर सकेंगे। अगर हम स्टील की खपत के बारे में भी देखें, 55% से 60% के बीच में जो इस्पात की जो खपत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में होती है। तो वो बहुत लंबे समय के लिए वो जो इस्पात है वो बुक हो चुका है,
उसे स्क्रैप के रूप में परिवर्तित नहीं देखा जा सकता, नहीं किया जा सकता है। जो बाकी बचा हमारा 45% जो इस्पात बचा है, जो इस्तेमाल होता है हमारे रोजमर्रा के कार्यों में, इलेक्ट्रिकल गुड्स में, वाइट गुड्स में, तो उसको या